Hello students, today in our session we are going to discuss about the previous year questions asked in JEE exams from the chapter P block elements. So I hope you go really well through this video, and all of these questions which are discussed down in the module contain certain important concepts which would be very useful for you for last minute revision. So let's start off with our discussion of the questionnaire. The first question says diborane, which is B2H6, reacts independently with O2 and H2O. You need to find out what could be the corresponding products. Now, as we all are aware about the reactions between boron, so if you take boron and oxygen, definitely you are going to get compound which is B2O3, that is boron oxide. And also if you talk about boron, when treated with water, this is going to give you again a compound which is H3BO3. Remember, H3BO3 could also be written as BOH thrice. And over here, what we need to discuss further is, or what we need to understand further is one more thing. Both of these reactions are exothermic. So please remember, these questions could be also asked as which amongst the following reaction is exothermic. And right now, hey, we get your answer. The answer is B2O3 and H3BO3. So therefore, the correct option over here is option A, which could be the right answer. Further, let's move with the next question. The next question says, how can the given reaction be completed, or how can the given reaction be proceeded in forward direction? And mind it, this question was asked in 2006 mains exam. So let's start off with the discussion. Before that, let's read out the options. The very first option says it's the addition of cis 1,2-diol. Second is addition of borax. The third one is addition of trans 1,2-diols, and next one is addition of Na2HPO4. So over here, what we need to understand is, what is the reaction given to you? The reaction that is given is BOH thrice plus NaOH. Now, one thing what we need to understand is BOH thrice, which is H3BO3 indirectly. So BOH thrice is a weak acid. And if you're going to titrate it against a base NaOH, definitely he is going to give you a compound BOH 4 times with a negative charge. And because you are adding NaOH, you would get Na, which would be the positive ion that is combined over here. Now, a need to understand over here is formation of BOH 4 times negative is highly inadvisable. Now, a point to remember over here that this reaction is a reversible reaction, and BOH 4 times negative is unstable. So what's going to happen? Definitely your reaction is going to proceed in backward direction right now. But we need to proceed the reaction in forward direction. So what could be done? Let's understand over here. Then over here, first of all, if you notice the structure of BOH 4 times with a negative charge would be something like this. Now, in this, if you add a cis alcohol, that is a cis diol, then what would happen? Let's see. Over here we are adding CH2, single bond CH2, which is basically also referred as a glycol. So addition of glycols, and because of this addition, what's going to happen? Then OH and H would combine, gives you a loss of water molecule. Similarly, this OH and this H combines, again gives you a loss of water molecule. And what you would get is, you would get a precipitate which is BOH on this side, OH on the other side. Here you would get coordinate bond O, single bond CH2, which combines with CH2 once again over here, again an oxygen and a bond over here. Now this compound, that is a complex which is formed over here, this compound gets precipitated.
So what is going to happen with the concentration of BOH4 negative? Definitely the concentration of BOH4 negative is going to decrease, and if the concentration of the products decreases, the reaction would move in the forward direction according to Le Chatelier's principle, and therefore over here what could be the right answer? Then the correct answer over here is option A, that is addition of cis 1,2-diol. Please remember, it's the addition of cis 1,2-diol and not trans 1,2-diol, because with trans the reaction won't happen. One OH is in one direction, other OH points in the other direction, so obviously the reaction is not going to happen. Okay, so let's start off with the next question. The next question says, in a compound of type ECl3, you are given a compound ECl3 where E could be boron, phosphorus, arsenic or bismuth. We need to find out the angles of a compound ClECl for different E's would be in which order. The given options for us, option 1 says boron greater than phosphorus equals to arsenic equals to bismuth. Next says boron greater than phosphorus greater than arsenic greater than bismuth. Next says boron less than phosphorus equals to arsenic and bismuth, and the last one says boron less than phosphorus less than arsenic less than bismuth. So over here let's try to understand how exactly this question would be dealt with. Now the very first thing what they have asked you is, you are getting a compound of a type ECl3, meaning let's take a very simple example. You take an example of BCl3, and we all know in BCl3 your boron, the central atom boron, is sp2 hybridized. And if the atom is sp2 hybridized, definitely what could be the bond angle? It's 120 degrees. Similarly, if you talk about phosphorus, then so phosphorus you get PCl3. Hey, but then remember, phosphorus belongs to group 14, boron belongs to group 13. So in boron you won't be having any lone pairs, but in phosphorus you will be having a lone pair, and it's because of this lone pairs your hybridization would come out to be sp3 hybridized. So therefore if the compound is sp3 hybridized, definitely your bond angle would be around 109. And what we need to remember over here for group 14, that as we move down the group, the bond angle goes on decreasing. So for phosphorus, if you say it's 109, then for arsenic it would be less than that. For bismuth it would be still less than that. So over here you tell me which compound will have the highest bond angle. It's definitely a compound of boron. So what is your answer? Your answer is boron would be greater than phosphorus, which would be greater than arsenic, and which would be greater than bismuth. So therefore the correct answer over here is option B. Let's move on with the next question. The next question says, aluminium is usually found in +3 oxidation state, in contrast to thallium, which exists in +1 as well as +3 oxidation states. This is due to which effect? Now we all know this comes as a factual question, but please remember, such a simple question was a 2009 mains question, and as we all know, this answer would be because of inert pair effect. Once again, what is inert pair effect? Then inert pair effect is nothing but, if you talk about group 13, which is boron, aluminium, gallium, indium and thallium, what we need to remember, as we move down the group from boron towards thallium, what is going to happen? The stability of lower oxidation state, that is +1, will go on increasing, whereas that of higher oxidation state would go on decreasing. And therefore over here the correct answer is option C, that is inert pair effect. Fine, let's go on with the next one. The next question says, the number of 2 center 2 electron bonds and 3 center 2 electron bonds in B2H6 is respectively. We need to find out the number of these bonds. Let's look at the options first. The first option says 4 and 2. The second option says 2 and 4. The third option says 2 and 2. The fourth option says 2 and 1. Again, if we start noticing about the question, the very first thing, we need to draw the structure of B2H6. And as we all know, B2H6 would be nothing but BH3
twice. So over here you have BH3 twice, and let's draw the structure now. You would get boron, यहाँ पे 3 hydrogens you would get, then you would have one more boron, इसमें भी 3 hydrogens आ जाएंगे. Fine. अच्छा, now what's going to happen? Then you would get a bond between boron and hydrogen, and यहाँ पे भी boron and hydrogen के बीच में bond आ जाएगा. लेकिन ये जो bonds है between boron and hydrogen, the dotted bonds, these bonds are just merely the forces of attraction. इसमें कोई भी electron involved नहीं है. Whereas if you talk about the bonds between boron and hydrogen, the bonds which are shown by solid lines, इसमें 2 electrons involve होंगे. So over here, let's look at the question once again. हमको क्या पूछा गया? 2 center, 2 electrons. Hey, now if you notice, boron and hydrogen जो solid bonds है, इसमें how many atoms do you have? Do you have 2 atoms? Definitely. तो यहाँ पे 2 atoms है, and इन दोनों में 2 electrons भी हैं. So can I say these bonds are example of 2 center, 2 electron bonds? Perfect. अच्छा, ऐसे कितने bonds हैं तुम्हारे पास? तो यहाँ पे 1, 2 एंड यहाँ पे ये 2 बन जाएंगे. सो टोटल ऑफ 4 2 center 2 electron bonds. लेकिन अब अगर ये bonds नोटिस किए जाए, चेक करो. Over here, the banana bond वाला stuff. Over here in these banana bonds, if you notice, how many centers do you have? How many atoms do you have? तो हमारे पास 3 atoms है. And in these 3 atoms, what we could say, तो सर पहला हाइड्रोजन एंड बोरॉन के बीच में जो डॉटेड लाइन शो किया है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं. तो हाइड्रोजन एंड बोरॉन जो सॉलिड लाइन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है. सो 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन. मतलब दिस बॉन्ड, द बनाना बॉन्ड, इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, whereas these bonds are 2 center 2 electron bonds. So check करो कितने bonds हैं. तो 2 center 2 electron are 4 in number, and 3 center 2 electron bonds are 2 in number. Therefore, your correct answer goes as option A, which is 4 and 2 respectively. Let's move on with the next question. The next question, again a 2019 mains question. So over here, the correct statement amongst 1 to 3 in regards to group 13 oxides, please remember this, it's talking about oxides, are what? The first statement reads out, boron trioxide is acidic. Further, the second statement, oxides of aluminium and gallium are amphoteric in nature. And the last one, oxides of indium and thallium are basic in nature. Over here, if you notice, boron oxide would be obviously acidic in nature. Aluminium and gallium would be definitely amphoteric in nature. And lastly, अगर तुम indium and thallium की बात करोगे, तो ये दोनों metals की तरह behave करते हैं, and metal oxides हमें पता है कि these are basic in nature. So over here, these 2 oxides would be basic in nature. So अब check करो कौन से statement सही है यहाँ पे. तो यार तीनों ही सही है. So therefore the correct option again for this question becomes option A, that is first, second and third. All the statements are right. Let's go on with the next question. The next question says the increasing order of atomic radii for group 13 elements. Again, this question sounds very simple, but trust me, ये question पूछा देखो कहाँ गया. 2016 advanced question है ये. So over here, if you notice, हमें एक चीज़ पता है, group 13 contains boron, aluminium, gallium, indium and thallium. ठीक है. Now we also know that as we move down the group, what's going to happen with the atomic size? Obviously, atomic size is going to increase. मतलब बोरॉन सबसे छोटा रहेगा, थैलियम सबसे बड़ा रहेगा. डेफिनेटली ये सही है, नो प्रॉब्लम विद दिस. बट देन वी हैव ऑल्सो लर्न कि यहाँ पे ना एक एक्सेप्शनल केस आता है, एंड दिस एक्सेप्शनल केस इज फॉर एल्यूमिनियम एंड गैलियम. गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से ज़्यादा होना चाहिए था, बट एक्चुअली वो साइज क्या होता है? वो होता है छोटा. Why is that so? So because gallium में introduction of d orbitals हो जाता है, and d orbitals, as we all know, have poor screening effect. So if your screening effect is poor, definitely your effective nuclear charge would increase, thus decreasing the size of the atom. तो मुझे बताओ सबसे largest size किसका आएगा? तो obviously it would be for thallium. मतलब right now options A, B and C are correct, because D में obviously indium लिखा है, तो वो सही नहीं हो सकता. ठीक है. अच्छा, after thallium कौन आएगा? तो after thallium indium आना चाहिए, तो thallium के बाद आ जाएगा indium. मतलब ऑप्शन A and B अभी भी करेक्ट है. C is out of the question. चलो आगे देखते हैं. अच्छा, थैलियम हो गया, देन इंडियम. अच्छा, उसके बाद कौन आना चाहिए? तो उसके बाद एक्चुअली आना चाहिए गैलियम, बट वो नहीं आएगा.
Instead of that, you would get aluminium. So over here, it's thallium greater than indium, which is greater than aluminium, which is greater than gallium. Boron right now it's not there in the question. अगर रहता तो बोरॉन सबसे छोटा आ जाता, ठीक है. So over here the correct answer is definitely option B. Let's go on with the next question. H3BO3 is what? Now H3BO3, as we said earlier, एक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग ने बोला था कि बोरॉन ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. डेफिनेटली यार वो लोग एसिड होते हैं. सो H3BO3 इज डेफिनेटली एन एसिड, लेकिन इज इट अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड? तो इट हैज़ टू बी अ वीक एसिड, ठीक है. बोरॉन एक नॉन मेटल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल नहीं है, तो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं दे पाएगा वो. सो ओवर हियर बोरॉन गिव्स यू अ वेरी वीक एसिड विच इज H3BO3, एंड प्लस प्लीज रिमेंबर H3BO3 इज अ मोनो बेसिक एसिड. मतलब 1 mole of H3BO3 would only react with 1 mole of OH negative. Therefore, it would be monobasic. So check करते हैं options. The very first option says monobasic acid and a weak Lewis acid. This one is correct. But बाकी के check कर लेते हैं. Next one, monobasic and weak Bronsted acid. नहीं, हाँ यहाँ पे Bronsted base होता तो option सही आता, ठीक है. अच्छा अगला देखते हैं. Monobasic and a strong Lewis acid. Definitely not. It's not a strong Lewis acid. Next one, tribasic acid and a weak Lorentz-Bronsted acid. So again, this couldn't be the right answer. Why? क्योंकि वो tribasic नहीं है. ध्यान रखना, हम यूजुअली ये कंफ्यूजन कर जाते हैं कि बिकॉज यू आर एबल टू सी 3 हाइड्रोजन एटम्स इट कुड बी ट्राइबेसिक. लेकिन ओवर हियर इफ यू नोटिस H3BO3, as we discussed in the first question of this session only, can be written as BOH thrice. And ध्यान रखना, this compound which is H3BO3, it doesn't loses a proton. ये proton lose नहीं करता, rather ये एक OH negative accept करता है. So because of that, what you would get, this BOH thrice gets converted into BOH4 negative. And this guy does act like an acid. He doesn't donate proton. Once again, I'm repeating, he accepts a hydroxide group. And therefore, again, let's mark the answer over here. The correct answer is option A, which is monobasic and it is a weak Lewis acid. Let's go further with the next question. So let's start off with the next type of questions. Now, please remember these questions are the questions in which you have multiple options correct. So, देखते हैं, the very first question, the first question says, the crystalline form of borax has what? Option A, a tetranuclear B4O5 OH 4 times -2 as a unit. Second, all boron atoms in the same plane. The third one says equal number of sp2 and sp3 hybridized boron atoms. And the fourth one is one terminal OH on each boron atom. अच्छा, अब सबसे पहले बोरैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स इज Na2B4O5 OH 4 times, and this entire thing is attached on with 8 H2O molecules. This is formula of borax. अच्छा, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं याद रखना, तुम एक और फॉर्मूला याद रख सकते हो, which is Na2B4O7 dot 10 H2O. And next thing what we need to remember is इसका structure. अच्छा, इसका structure कैसे आएगा? तो the structure of this entire thing would be somewhat like this. You would have boron at the 4 corners of a quadrilateral. So यहाँ पे तुम्हारा आ गया boron, center में आ गया oxygen. Okay? चलो आगे देखते हैं. Next up is you would have in between these two borons one more oxygen bond, and finally each boron would be having an OH group. Okay, so now let's check. अच्छा, यहाँ पे है ना, देखो अगर नोटिस करोगे तो बोरॉन 2 टाइप के हैं. एक टाइप का बोरॉन वो है जो सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना रहा है, दूसरे टाइप के बोरॉन्स वो है जो 4 बॉन्ड्स बना रहा है. ना बोरॉन 3 बॉन्ड्स बनाना इज काफ़ी नॉर्मल, लेकिन अगर बोरॉन 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा. एंड देयरफॉर व्हाट वी कैन डू और व्हाट वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर दैट दीज 2 बोरॉन्स व्हिच आर फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स would be having
अ नेगेटिव चार्ज। अच्छा आगे देखते हैं। नाउ बोरॉन इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियसली ये जो 2 बोरॉन्स है जो 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। सो यहाँ पे sp2 एंड यहाँ पे भी sp2 आ जाएगा, पॉइंट नंबर 1। अच्छा लेकिन वो बोरॉन्स जो 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, डेफिनेटली इनका हाइब्रिडाइजेशन हैज टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, पॉइंट नंबर 1। सो एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन कितने हैं? तो 2 है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन वो भी 2 है। सो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन सी तो एक सही ऑप्शन है कि हाँ, यू वुड हैव इक्वल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन्स एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन्स। अच्छा एक और चीज चेक करो, डी वाला ऑप्शन, एवरी बोरॉन हैज 1 टर्मिनल OH ग्रुप। तो हाँ है, एवरी बोरॉन कंटेन्स 1 टर्मिनल OH ग्रुप एंड देयरफॉर इवन दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे देखते हैं। अब अगर तुम बात करोगे, एक बोरॉन इज sp3, दूसरा बोरॉन इज sp2। नाउ sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन, इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा? तो डेफिनेटली दिस हैज टू बी अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। And one more thing, if you notice, boron is connected to 4 different atoms. मतलब would you have 4 different nuclei present over there? Absolutely right. Therefore, what we could say is the boron, which has a negative charge and it is connected to 4 different atoms, is a tetranucleated unit. And therefore, option A भी हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं ऑप्शन बी के बारे में। ऑप्शन बी सेज ऑल द बोरॉन्स शुड लाई इन द सेम प्लेन। यार ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज अ नॉन प्लेनर ज्योमेट्री, एंड अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज अ नॉन प्लेनर ज्योमेट्री, देन डेफिनेटली व्हाट यू वुड से इज कि एवरी बोरॉन कुडंट लाई in the same plane. There would be certain boron atoms which would be lying in a different plane. Also you could remember it like this कि 2 बोरॉन्स sp2 है, 2 बोरॉन्स sp3 है, डेफिनेटली उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, तो ज्योमेट्री भी सेम नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर ऑप्शन बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स ओवर हियर? द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ऑप्शन ए, सी एंड डी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट अबाउट ऑर्थोबोरिक एसिड्स is or are what? Let's see the statements. First statement says it behaves as a weak acid in water due to self-ionization. Second statement says the acidity of its aqueous solution increases upon addition of ethylene glycol. The third statement, it has a 3-dimensional structure due to hydrogen bonding. And the fourth statement says it's a weak electrolyte in water. एंड H3BO3 को ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो दिस कुड बी रिटन एज BOH thrice. Okay, very well then. Let's start about the discussion of the question. So let's start off with the first statement. अच्छा चलो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? It behaves like a weak acid. यार ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो सही है, बट देन आगे क्या लिखा है चेक करो, ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन। नाउ the acid is a weak acid, but it doesn't act as a weak acid because of self-ionization. Therefore, this statement over here is a wrong statement. Next one, the option B, it says the acidity of its aqueous solution could be increased by addition of ethylene glycol. Now, if you notice, हम लोग ने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे हम लोग ने बोला था कि अगर तुम्हें ग्लाइकॉल या एक सिस 1,2 डायोल कंपाउंड H3BO3 के साथ डाल देते हो तो डेफिनेटली व्हाट वुड हैपन, इट वुड इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एंड यार अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, तो डेफिनेटली यार एसिडिटी भी इंक्रीज होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लेट अस जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट वंस अगेन ओवर हियर। हम लोग ने ये बोला था कि BOH thrice when treated with NaOH gives you रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड इस रिवर्सिबल रिएक्शन में तुम्हें एक कंपोनेंट मिलता है विच इज BOH 4 times with a negative charge. एंड वॉट वी हैव सेड इज कि दिस रिएक्शन अगर तुम्हें इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना है, मतलब BOH थ्राइस को एक एसिड की तरह एक्ट करवाना है, तो तुम्हें एक सिस डायोल ऐड करना पड़ेगा विच इज इथिलीन ग्लाइकॉल। सो अगर तुम इथिलीन ग्लाइकॉल ऐड करोगे डेफिनेटली द रिएक्शन वुड मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो बी स्टेटमेंट यस इट्स एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। चलो आगे देखते हैं द सी स्टेटमेंट। The C statement says it has a 3-dimensional structure due to hydrogen bonding. Then this is definitely a wrong statement.
प्लीज रिमेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होता जरूर है, लेकिन इट नेवर गिव्स यू अ 3-dimensional structure, it gives you a planar sheet like structure. So over here this structure is a 2-dimensional or a 2D sheet like structure, and therefore this statement is obviously the wrong statement. Acha, further, next one, D, it is a weak electrolyte in water. Then the statement is right. Q, so because H3BO3 is a weak acid, so definitely आपको एक positive entity देगा, एक negative entity भी देगा, and on top of that अगर तुम इसका Ka value check करोगे, it comes around 9.25. That means yes, definitely it's a weak acid, but it could also act like a weak electrolyte in water. So statement D is also the right statement. So यहाँ पे अगर notice करोगे कौन से दो statement सही है, it's statement B and statement D. So चलो, let's start off with the next question. The next question reads out, amongst the following, the correct statements or statement are. Let's look at the statement first. The first statement says AlCH3 thrice has 3 center 2 electron bonds in its dimeric structure. Second statement, the Lewis acidity of BCl3 is greater than that of AlCl3. The next statement reads out AlCl3 has 3 center 2 electron bonds in its dimeric structure. And the fourth one, BH3 has 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर. अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसमें से एक स्टेटमेंट तो 110% करेक्ट है, एंड विच इज दैट स्टेटमेंट विच इज करेक्ट? इट्स ऑब्वियसली द स्टेटमेंट डी, बिकॉज हम अभी तक 2 बार पढ़ चुके हैं कि हाँ डेफिनेटली BH3 हैज अ बॉन्ड विच इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. अब आगे बढ़ता है AlCl3 इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले डायमेरिक स्ट्रक्चर बना देते हैं ना यार इसका. सो AlCl3 का डायमेरिक स्ट्रक्चर वुड बी समवॉट लाइक दिस. AlCl3, सो दिस इज वन मॉलिक्यूल. ओके, दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ AlCl3. अच्छा, अब हमें एक चीज पता है, क्लोरीन कंटेन्स 3 लोन पेयर्स. सो यहाँ पे क्लोरीन के 3 चुन्नू मुन्नू आ गए. ठीक है, अब क्या होगा? तो सर ये जो क्लोरीन है ये अपने ऑपोजिट एल्यूमिनियम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है. अब चेक करो, ये वाला जो बॉन्ड है, द बनाना बॉन्ड, जो हम लोग देखते आ रहे हैं कब से, ठीक है, इन दीज बनाना बॉन्ड्स वुड यू हैव 3 सेंटर्स? देन डेफिनेटली यार तुम्हारे पास 3 सेंटर्स तो है, but 3 center, and does it have 2 electrons or 4 electrons? Then it has 4 electrons, and therefore this statement, that is AlCl3 in its dimeric structure has 3 center 2 electron bond. This statement is obviously the wrong statement. So let's move on with the second statement, the statement B. अच्छा, statement B क्या बोल रहा है तुमको? तो देखो, statement B says that the Lewis acidity of BlCl3 is greater than that of AlCl3. तो यहाँ पे ये statement सही है. Now this statement can be justified using 2 different concepts. हम लोग दोनों डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. Over here अगर तुम नोटिस करोगे BCl3, देन इन BCl3 तुम्हारे पास डेफिनेटली एक वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट BCl3 कुड शो यू अ फिनोमेना कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग. अच्छा, अब नोटिस करना यार, बोरॉन में अगर p ऑर्बिटल प्रेजेंट है एंड वो बैक बॉन्डिंग दिखा सकता है, तो एल्यूमिनियम के पास भी तो प्रेजेंट है, वो भी तो दिखा सकता है डेफिनेटली. सो यार AlCl3 इसमें भी बैक बॉन्डिंग आ सकता है, एंड इसका जो बैक बॉन्डिंग होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है. सो इफ AlCl3 हैज़ अ बैक बॉन्डिंग विच इज़ वेरी एफिशिएंट, देन ऑब्वियसली Al डेफिनेटली रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन, बट ही डजंट रिक्वायर इलेक्ट्रॉन सो ड्रास्टिकली. तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट करेगा? नहीं कर पाएगा. तो हु वुड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली? इट्स डेफिनेटली बोरॉन. एंड यार अगर बोरॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इज अ लोएस्ट एसिड. तो हु वुड बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड? इट्स डेफिनेटली बोरॉन हु वुड बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड. सिमिलरली सेकेंड कंसेप्ट जो तुम इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हो, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, चलो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, बट देन बोरॉन कम्स इन विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2,
whereas aluminium comes in with an electronegativity of 1.5. So who has more tendency to attract electrons? It's definitely boron, and thus boron would tend to gain electron easily. So who would be a stronger acid? It's BCl3 as compared to AlCl3. तो यार ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली एक सही स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट बी इज द राइट स्टेटमेंट. चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट. द फर्स्ट स्टेटमेंट जो बचा हुआ है अपने पास वो रीड क्या कर रहा है? इट सेज दैट AlCH3 thrice contains 3 center 2 electron bonds in its dimeric structure. तो यार ये भी देख लेते हैं, चलो देखते हैं. सो फॉर दैट हमें AlCH3 thrice का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. पहले वो कर लेते हैं एंड देन विल डिस्कस आउट व्हाट एग्जैक्टली डज द स्टेटमेंट मीन. सो इफ यू नोटिस this becomes your Al1CH3, this becomes the second CH3 molecule, and ये हो गया तुम्हारा थर्ड CH3 molecule. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेना. You would have one more aluminium, one more CH3, second CH3, and this comes out to be the third CH3 molecule. अच्छा, now this CH3, you have aluminium and CH3 के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, but ये 2 electrons can be shared with the other aluminium atom. So over here what you would get is, you would definitely get a bond which is a 3 center bond, क्योंकि aluminium, carbon and carbon ऐसे 3 elements present है वहाँ पे. So 3 center bond तो definitely है ये, and 3 center 2 electron bond भी है. So therefore statement A is obviously the correct statement. So यहाँ पे correct statements कौन से बन जाएंगे? It's A, B and D. ठीक है, चलो let's move on with the next question. The next question says, in a reaction 2x plus B2H6 gives you BH2X2 positive and BH4 negative. In this, X is what? तो फर्स्ट ऑफ ऑल X इज अमाइंस, बट ये कौन से अमाइंस हो सकते हैं? तो चलो ऑप्शंस देख लेते हैं. द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज अमोनिया NH3, सेकंड CH3 NH2, द नेक्स्ट वन से CH3 NH, एंड द लास्ट वन से CH3 N. ओवर हियर व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज, यार अगर हम लोग B2H6 का रिएक्शन करवाते हैं विथ प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन or ammonia, then you would get an unsymmetrical breaking. तो यहाँ पे तुम्हें unsymmetrical breaking मिलेगा, and because of this unsymmetrical breaking, what's going to happen? Let's understand. You would get a compound which is BH4 negative. तो यार चेक करो, इन दी अबव रिएक्शन तुम्हें BH4 नेगेटिव मिल रहा है क्या? तो हाँ बिल्कुल मिल रहा है. तो अगर BH4 नेगेटिव मिल रहा है मतलब तुम्हारे जो अमाइंस होने चाहिए वो कौन से अमाइंस होने चाहिए? देन इट कुड बी आइदर प्राइमरी अमाइन और अमोनिया या सेकेंडरी अमाइन, ये 3 हो सकते हैं. सो ओवर हियर ऑप्शन ए, इज इट अमोनिया? यस, मतलब दिस कुड बी पॉसिबल. अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन बी, इट हैज एन NH2 ग्रुप प्रेजेंट एंड NH2 इज ऑलवेज प्राइमरी अमाइन, तो यार ये भी हो सकता है. अच्छा, थर्ड वन चेक करो, इज इट हैविंग NH ग्रुप? Definitely NH stands for secondary amine, so even this is the right statement. And lastly you have N, which is nothing but a tertiary amine, and tertiary amine BH4 negative दे सकता है क्या? तो नहीं दे सकता, and therefore the option that is X are what? It could be A, B और C. ये तुम्हारे 3 करेक्ट ऑप्शंस बन जाएंगे. ठीक है, चलो लेट्स गो ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर ऑफ द टाइप assertion and reasoning type. Over here the first question says, statement 1, boron always forms covalent bond. Statement 1. Statement 2 says the small size of B3 plus favors the formation of covalent bond. यार अभी हम लोग को एक चीज पता है, बोरॉन इज द स्मॉलेस्ट एटम इन योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स या इन योर पी ब्लॉक ग्रुप 13 एलिमेंट्स, एंड अगर वो स्मॉलेस्ट एटम है तो डेफिनेटली बाय फजान्स रूल हम क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, स्मॉलर द कैटायन लार्जर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना?
सो अगर यार तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर लार्जर बनते जा रहा है, सो डेफिनेटली बोरॉन वुड फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स. एंड ये क्यों बना रहा है कोवेलेंट कंपाउंड्स? बिकॉज साइज ऑफ B+3 आयन इज वेरी वेरी स्मॉल. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ये भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1 ऑल्सो. एंड दस व्हाट वी कैन से कि भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो द आंसर फॉर दिस वुड बी ऑब्वियसली ऑप्शन ए. सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ठीक है, चल लेट्स मूव विद द 14th क्वेश्चन ओवर हियर. द 14th क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 says in water orthoboric acid behaves like a weak acid, definitely, and weak monobasic acid. Statement 2 रीड करता है in water orthoboric acid acts like a proton donor. Now just understand this. Over here what we need to remember for this is कि orthoboric acid which is BOH thrice. इन दिस अगर तुम नोटिस करोगे तो क्या ये वीक मोनोबेसिक एसिड है? डेफिनेटली है. बट देन इज इट एक्टिंग लाइक अ प्रोटॉन डोनर? देन नो, इट डजंट एक्ट लाइक अ प्रोटॉन डोनर. सो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड अगर ऐसा होता है दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? देन ओवर हियर यू वुड से द आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, further let's move on with the next one. Statement 1 says AlOH thrice is amphoteric in nature. यार ये सही है, बिल्कुल सही है. अच्छा, statement 2 says AlO and OH bonds can be broken with equal ease in AHOH thrice. So over here statement 1 is definitely right because aluminium hydroxide हमें पता है that this compound is amphoteric in nature. अब statement 2 क्या रीड कर रहा है? It says कि तुम्हारे पास जो AlOH बॉन्ड होते हैं इसमें से AlNO बॉन्ड या ONH बॉन्ड ये दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ ब्रेक किए जा सकते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. रिमेंबर दिस एज अ फैक्ट. एल्यूमिनियम का जो चार्ज टू मास रेशियो होता है, ओके, सो द चार्ज टू मास रेशियो फॉर एल्यूमिनियम एंड द चार्ज टू मास रेशियो फॉर ऑक्सीजन are comparable, and because of this Al and O के बीच का बॉन्ड या ONH के बीच का बॉन्ड can be broken with almost the same energy, and thus statement 1 is right, statement 2 भी correct है, plus statement 2 is a correct explanation also. So यार कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा यहाँ पे? तो obviously option A would be the correct option. Let me just mark all the answers with a different color तो हम लोग इसको मेक आउट कर पाए. फर्स्ट वाले का आंसर वाज ऑप्शन ए, इसका इज ऑप्शन सी, एंड लास्ट वन इज ऑप्शन ए. ठीक है, सो दैट वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर JEE एग्जाम्स फॉर ग्रुप 13. प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप डाउन अ कमेंट as to which chapter you intend to learn further with respect to the past year question papers. Also, please like, subscribe and share this with your friends so even they could benefit from the past year paper discussions. Thank you students and happy learning.